So shall we start? Now see, previously what we have to do, so we have to perform BFS, we have to perform RBFS, okay? Then we have to perform ES star, then we have to perform DFS and BFS. All these type of algorithm we have to perform. That is a search inform. And we can also perform 8 puzzle. Okay, we can also perform 8 puzzle. So these all are based on heuristic function. These all are based upon heuristic function h of n. So among h of n is a minimum, then you can explore. Okay, so today we are going to discuss about simple hill climb problem. That is called simple hill climb algorithm. Simple hill climb algorithm. Now see, so the meaning of hill, so we can understand. So first we can draw this one graph. Suppose this is the one graph, and inside that, suppose the given like this one. Okay, the hill structure. This is the hill structure is given like. So suppose I can travel from here to here to here to here, and then here, then again here, and up to like this one. Okay, so this is the possibility we can find out, and we can find out the solution. So we have to move on the hill on x-axis and along y-axis. So basically hill climb algorithm work on 3 category. That means we can say that 3 category is there. First one is called, it based upon the local search. So it's search criteria based on the local search. Second one is called greedy approach. Greedy approach. And third one is called no backtracking. No backtracking. So when we're talking about a simple hill climb problem, so it based upon the local search, then it can follow greedy approach and non-backtracking. That means what is the meaning of all the things? So basically hill algorithm, I suppose my current state is here. Okay, current state is here. I can moving from this direction. Okay, and one simple measure mandatory condition, hill climb always move linear direction or single direction. It cannot move both direction. Okay, so if we start search, so it, you can say that always move single direction. So hill climb always move single direction. So it can go upward, it can be go vertical or horizontal. Now see, how can find out the solution? Always we try to find out. So this is the local search. So what is the meaning of local search? That means always look for the neighbor. Always look for the neighbor. So what is the meaning of the previous one? What we have to do? Suppose this is that this is given. Okay, suppose this graph is given, and we can apply BFS, RBFS, AS star, DFS, BFS. Then what we have to do? First we have to reach here. That means we have to start here. Then we have to explore both. Yes or no? We can explore both adjacent. But in hill climb, we can only explore the neighbor node, not a adjacent node. Suppose, so that's why, so suppose in my this here, so these are the hill. So in hill, there is a only possibility of neighbors, no adjacent. So it's work on the neighbor nodes. And we can compare the value. That means the greedy approach comes. The greedy approach comes. So what is the meaning of greedy? So suppose whatever the value of my previous one, then compare with the next step. If I am getting the next step values better than the previous one, that means I am getting the optimal solution. That is the meaning of greedy. Each and every state I can find out the best solution. Each and every state. So now, so this is the greedy algorithm, and this is the no backtracking. That means suppose I can reach here. Now understand why this is called no backtracking. Suppose I can reach here. Okay, up to here, I can reach here.
That means on the top. On the top, my value is highest among the previous value. Yes or no? Previous value on the top, my value is highest. Then if I go for this right direction, then value is again down. That means that side I can get the lower value of the previous value, so it cannot move back. That means your algorithm will be stopped here. That means I can achieve the maximum value. It cannot go down previous one. So this is the process we can find out the simple hill climb problem. So point is that always compare. So we have to write that how can find out uh, if so how this algorithm will work, I'm going to show you now. This is the hill climb. So I am talking about this. Suppose from this point I am talking, this is the local minimum, local maximum, not a minimum, local maximum. And this point is called local, or sorry, not a local, global maximum. ग्लोबल मैक्सिमम. नाउ देखो, अगर इसको हम जनरल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं, सो हिल क्लाइंब एल्गोरिदम को, तो सिंपल सा है. अगर आपको किसी भी हिल पे चढ़ना है, ओके, और सपोज आपको उसके मैक्सिमम पिक तक पहुंचना है, तो क्या करते हैं हम लोग चढ़ना स्टार्ट करते हैं. तब तक चढ़ते हैं जब तक हमें समझ में नहीं आता कि इसके बाद हम चढ़ नहीं पाएंगे. दैट मीन्स वी कैन नॉट स्लिप डाउन. सो अगर मान लो कि हमारा हाइट 10 मीटर्स है और हमने 9 मीटर्स तक हम चढ़ पा रहे हैं अपने हिल्स पे, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी, 9 होगी. क्योंकि हम 10 तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है पहुंचना. हम एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे हैं नेबर को. तो अगर नेबर को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 9 आउट ऑफ 10. अगर हम 10 के बाद अगर फिर से डाउन आते हैं तो वो तो ऑप्टिमल नहीं होगा, क्योंकि वो 10 से क्या होगा, तो घटने लगेगा, क्योंकि टॉप के बाद तो हिल घटता है, तो वो हमारी वैल्यू नहीं होगी. अब देखो, अब पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास बहुत सारे हिल हैं. देखो, इसमें बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या आते हैं हिल एंड क्लाइंब मेथड में. सपोज वी कैन ड्रॉ लाइक दिस वन, ओके, दिस वन एंड नाउ दिस वन. सो अगर हमने चढ़ना यहां से स्टार्ट किया, भाई यहां से हमने चलना स्टार्ट किया और आई कैन रीच हियर. सो फर्स्ट टाइम तो हमें तो यहीं पे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, लेकिन भाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम भी है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे फाइनल वैल्यू तो ऑप्टिमल ये वैल्यू है, लेकिन हमने क्या बोला, यही मैक्सिमम है. तो दैट इज द कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम प्रॉब्लम. इसीलिए हमने क्या बोलते हैं इसको, लोकल सर्च भी बोलते हैं. ओके, क्योंकि हमारी ऑप्टिमम वैल्यू तो पोजीशन नंबर, सपोज आई कैन पुट 1 2 3 एंड 4. अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आनी चाहिए, 4, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 पे. ये तो गलत है ना. सो इसीलिए बोलते हैं हिल क्लाइंब क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में. हमने यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकते. जाएंगे तो हमेशा अपवर्ड ही जाएंगे तो सिर्फ डाउनवर्ड ही जाएंगे, उसके अलावा नहीं. सो सिंपल बेसिक्स एल्गोरिथम है कि ऑल टाइम हमारा जो करेंट स्टेट है और नेबर स्टेट की वैल्यू को कंपैरिजन करते हैं. अगर नेबर स्टेट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो करेंट स्टेट बन गया, अगर उससे कम हो गई तो करेंट स्टेट ही हमारा न्यू स्टेट बन गया. सिंपल सा है. सो अगर हम बात करें इस एल्गोरिथम की, सिंपल सा बात करते हैं, तो दिस एल्गोरिथम इज कंप्लीट और नॉट. सो दिस इज नॉट कंप्लीट, नॉट ऑप्टिमल. अगर इसकी ऑप्टिमलिटी की बात करें तो ये हमारा नॉट ऑप्टिमल. ओके, बोथ दिस एल्गोरिथम इज नॉट ऑप्टिमल, नॉट अ कंप्लीट, द बेसिक फंडा. सो इसमें अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो व्हाट इज द प्रॉब्लम वी कैन फेस ड्यूरिंग हिल एंड क्लाइंब. Don't worry, I can write the algorithm also. So first I can discuss the concept. So what is the problem with hill climb? Okay, problem with hill climb.
सो बेसिकली प्रॉब्लम विथ हिल क्लाइंब क्या आता है? सो फर्स्ट वन प्रॉब्लम आएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा. So what is the meaning of local maxima? Just understand this graph. So this graph is, suppose I can draw like this one. Now this one. So अगर हम बात करें, अगर we can start from the here, so this one is the local maximum. Yes or no? But here this is a local maximum. Here is a, suppose इस comparison करते हैं इस और इसका, तो इसके लिए तो हमारा global हो गया, लेकिन ये हमारा क्या आ गया? Local. So local में we can get a maximum value, but in real life this is not a maximum value. This one is the maximum value. So we can face a local maximum problem due to this hill climb. Okay. Local minimum का तो बात ही नहीं कर सकते कि always compare with the current state and highest value. Okay. Second की बात करें, plateau. So these are the word. Plateau आप बोल सकते हैं या flat maxima. फ्लैट मैक्सिमा. सो बेसिकली इसकी अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, प्लेट्यू और फ्लैट मैक्सिमा. वेट, हाँ, सपोज आई कैन ड्रॉ दिस प्लेट्यू एंड फ्लैट मैक्सिमा. नाउ सी दिस वन. सो दिस वन, so sometimes what happened, I can approach there and then like this one, it will be like this one. Okay, so when I can start searching here, then I can reach the maximum value, then maximum value can extended up to sometimes. So these are the problem of the plateau flat maxima. So हमारा क्या होगा कि हमारे यहाँ पर भी मैक्सिमम मिल रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम due to the flat nature. Clear? So these are the problem. And third one we can say that reads. So reads का क्या मतलब होता है कि we always get same value, all the value are same like this one. Always आप कहीं भी travel करो, so we can get a same value always. So these are the reads. Okay, so these three problem we can face with the hill climb problem. Okay, so local maxima, plateau or flat maxima, and then reads. So we always get same value. So इसके always get same value, and this में after some extent we get same value. Okay, and this one is the local maxima. Okay, so these are the basic problem of hill climb: local maxima, plateau, and this one. So now see, what is the algorithm? So we can write this algorithm in this way. So here I am going to write the algorithm. Algorithm. So here we can use a local variable. Local variable. Two type of local variable I am using: current and neighbor. Okay. We can use two type of variable, local variable, current and neighbor. So now here, current is assigned. That means we have to make a node. So make a node initial state. Initial state. Okay. जो आपका initial state हो गया उसे आप current node assign कर दोगे. After that we have to create a one loop. So we have to follow one loop. Okay. In follow loop, do neighbor. We have to explore neighbor. We have to explore neighbor. Or inside neighbor, what we have to assign? A highest value. Highest value
successor of current node. Okay, highest value successor of current node. Okay, highest value of successor of current node. If, then put condition, if value of neighbor, if value of neighbor is less than equal to value of current, if value of neighbor is less than equal to, then return current statement. Then what we have to return? Then we have to return which state? So जो आपका स्टेट होगा वो क्या होगा? करंट स्टेट होगा, आपका करंट स्टेट होगा कंपैरिजन के बाद, जो आपकी अगर करंट की वैल्यू होगी। नहीं तो अगर मान लो कि ये कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका जो करंट स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा? नेबर हो जाएगा। तो आपका जो करंट स्टेट हो जाएगा वो नेबर हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम वी कैन परफॉर्म लाइक हिल क्लाइंब एल्गोरिथम, सिंपल हिल क्लाइंब, सिंपल हिल क्लाइंब। ओके, सो सिंपल हिल क्लाइंब एल्गोरिथम है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। लोकल करंट एंड नेबर दो टाइप होगा, हर बार हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और करंट वैल्यू से मैचिंग करते हैं हम लोग। ओके, is it clear? Anyone doubt regarding hill climb? This is very easy. Now this is different from others algorithm. Why? Because in all algorithm I can explore both adjacent node, neighbor plus adjacent both, but here we can only explore neighbor node. So that is the different. Okay, clear? Hill climb बहुत simple है. So anyone doubt online? Okay, clear. Okay, so this one is the hill climb. Then we can discuss more about hill climb, like analyzing search, all the things. So after that we can start for the game theory. That means we can go for the alpha beta proning, AOS star, beam search, like this one. So that time we can also restrict all the times. Now see, if talking about the space complexity, now why this is important sometime. So now in terms of space complexity, so these are important, these are the important point. Space complexity. So if I'm talking about the space complexity, if you compare with the all algorithm, inform and uninformed search, it will take less space because it only store the current state, not all the state. Current state, then delete previous one. Current state, then delete previous one. So in terms of time complexity, this is the best. Okay, in terms of time complexity, but others not a complete, not a optimal. अगर कोई पूछे कि भाई हिल क्लाइंब को यूज करना ही क्यों है, तो आप बता सकते हो कि फॉर द टाइम space complexity purpose I can use this one. Okay, is it clear regarding space complexity? Why is less? Okay, so here we can wind up this session because my Viva will be a start from 9 o'clock. So here I can